Hello, let us discuss some new topics in macroeconomics. The topic is injections and leakages. We know that there is circular flow in an economy. There is production phase, income phase, and expenditure phase. Production phase is also known as transition phase. Income phase is known as distribution phase, and expenditure phase is known as uh, disposition phase. So, what are leakages? Leakages in the circular flow of income are the economic activities that remove money from the circulation within an economy, causing a reduction in the overall flow of income. The primary types of leakages include savings, taxes, and imports. देखिए, लीकेजेस का मतलब किसी भी इकोनॉमी में ये होता है कि कोई पैसा जो इकोनॉमी में आया था वो अब इकोनॉमी में कहीं मूव नहीं कर रहा। हम लोग पढ़ते हैं ना कि लक्ष्मी चंचला होती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना चाहिए, तो सरकारी सिस्टम में एक दूसरे के यहाँ आना जाना चाहिए। मान लीजिए 2000 रुपये का नोट हमने जब 5000 पुराने 5000 और 1000 का नोट्स बैन करके नया वाला तो 2000 का नोट्स मिल रहा था। मान लीजिए हमने करप्शन स्कीम के तहत मैंने हमारा में से कोई अगर करप्ट हो तो या जो भी हो सेटिंग करके मैनेजर से हमने 2 लाख मान लीजिए करोड़ 2000 का नोट जो इकोनॉमी में निकला वो अब इकोनॉमी में कहीं घूम नहीं रहा है, वो हर कोई अपने घर में दबा लिए और उसको बाहर में मूव नहीं कर रहे। तो ये वो पैसा जो हमारा आप अपने घर में सेव कर लिए इकोनॉमी में उसको नहीं दिखा रहे। हो सकता है कच्चा में हम लोग आपस में एक दूसरे से लेन देन में यूज़ कर रहे हो, बट सिस्टम में बैंक के पास वो पैसा फिर से घूर करके कहीं नहीं जा पा रहा है। तो इस तरह से जो पैसा सेविंग्स के रूप में, टैक्स के रूप में या इम्पोर्ट्स के रूप में इम्पोर्ट्स करते तो क्या, तो हमारे देश का पैसा देश से बाहर चला जाता है। तो ये सब हो गया लीकेजेस के एग्जाम्पल। इंजेक्शंस क्या हो गए? इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। लीकेजेस का एक और बात बता दें कि लीकेजेस में क्या होता है, आदमी के हाथ से पैसा कट जाता है, निकल जाता है, सिस्टम में वो पैसा नहीं घूमता है। अब है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस इज द इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर द एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इंट्रोड्यूसेस मनी इनटू द इकोनॉमी, यानी जिससे इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा, एडिशनल मनी का इनपुट होगा, उसको कहते हैं इंजेक्शंस। जिससे क्या होगा, पूरे इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है। इसके अंदर एग्जांपल में आ जाते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपोर्ट्स। जब हम गवर्नमेंट कोई भी स्कीम पे खर्चा करेंगे, मान लिया आपके इलाके में अचानक रोड बनने लगा, आपके इलाके में अचानक गांव-गांव मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट हो गया, रेलवे स्टेशंस नए बनने लगे, रेलवे ट्रैक्स बिछने लगा, कैनल्स बनाए जा रहे, तो ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग एंड दीज एक्सपेंडिचर्स आर goes as revenue in the hands of contractors, subcontractors, farmers, laborers, etc., engineers, doctors, technicians, carpenters, all are earning। तो सबके हाथ में पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारा, आप अगर मान लीजिए पुराना सेविंग के पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते, कोई नया बिजनेस खड़ा करते, तो दैट इन्वेस्टमेंट increases flow of money in the economy। and export, whenever we export to some else country, we in return we get a foreign currency, so that is an injection of money in the economy। Now the next topic is investment। Investment is the net addition made to the existing stock of capital। मान लीजिए किसी इकोनॉमी में पिछले साल जो उस देश का टोटल एसेट था वो था 50 लाख करोड़ का। मान लीजिए इस साल गवर्नमेंट ने और एडिशनल लिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सारे लोगों ने मिलाकर के एक्स्ट्रा और 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो ऑलरेडी 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले से था और 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो टोटल मिलके जो हो गया, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। Now there are two aspects, gross investment and net investment। Gross investment is the sum total of 50 lakh crore and 5 lakh crore, 500 crores, or 5 lakh crores, that is 55 lakh crores।
But what happens whenever we invest in two kinds of assets. One is non-current assets and other is current assets. And usually non-current assets or fixed assets are depreciated every year. So the depreciation, that is also called consumption of fixed capital, that is the devaluation of fixed assets during a year. So that devaluation in terms of depreciation are when subtracted from gross investment, the remaining is called net investment. So net investment equals to gross investment minus depreciation. On the other hand, gross investment equals to net investment plus depreciation, and depreciation equals to gross investment minus net investment. Now, what is inventories? Actually, inventories means uh, current assets. Investment in working capital is called inventories. We have two kinds of investment. One part of the money is invested in long-term assets, non-current assets. That is okay, and the other investment is in inventories. That investment in inventories are also known as working capital. So the inventory usually means in business the unsold goods, unused raw materials or semi-finished goods which a firm carries from year to the next. Now there are three kinds of unsold goods or inventories. One is closing stock of finished goods. One is other is closing stock of raw materials, and the third is closing stock of semi-finished goods, that is also known as work in progress. There are two types of stock. One is fixed investment. The fixed investment stock is equal to stock of assets, stock of fixed assets at the end of the year minus stock of fixed assets in the beginning of the year. For example, if a business has uh, 10 lakh crore fixed assets at the end of the year and it was 8 lakh crore in the beginning of the year, so the fixed investment during the year is equal to 10 lakh crore minus 8 lakh crore, that is 2 lakh crore. Now, what is inventory investment? The stock of inventories or goods at the end of the year minus stock of stock of goods or inventories in the beginning of the year is equal to called inventory. Suppose some business has 5 lakh as closing stock and 3 lakh as opening stock, so the difference between the two is taken as inventory investment during the year. Now, indirect taxes. What is indirect taxes? Indirect taxes are those taxes those are charged by government on producers, on sellers, and those producers and sellers finally charges it from the consumers, the ultimate consumers. So the final burden of indirect tax is on the final consumers, the final user, those who are using goods as final goods.